Welcome back guys to the channel, and you guys are watching Arun's Travelpedia, and in this vlog I will cover the cost of living in Ireland. So this vlog is going to be in English and Hindi languages. So wherever I'm speaking in Hindi, I will put a title down in English so that it's easier for the wider audience to understand what I'm trying to say in Hindi there. बाहर का मौसम तो बिल्कुल कत्ल हो रखा है, बहुत ठंडी है बाहर और बिल्कुल हवा चल रही है। कल रात से बारिश हो रही है और अभी जो टेम्परेचर है वो 4 से 5 डिग्री का टेम्परेचर है। तो आप देख सकते हो मैंने मेरी आउटफिट, मैंने एक प्रॉपर एक जैकेट पहनी हुई है और मैंने अपनी कैप पहनी हुई है। सो आई एम ऑल पैक्ड अप एंड आई एम रेडी टू गिव यू द नॉलेज दैट आई हैव गॉट फॉर यू गाइज ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन आयरलैंड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आयरलैंड में एज कम्पेरेटिव व्हाट वाज देयर इन द लास्ट ईयर इन 2022 एंड 2021, क्योंकि एक तो रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से और अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो आए हैं ड्यू टू विच द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग हैज़ spiked up in Ireland, be it like accommodation, be it like grocery shoppings or any kind of daily necessities. They have increased a lot. So without any further delay, so let me start with the first one, that is the accommodation. So guys, when we talk about accommodation, so it totally depends upon where exactly you're going to stay, or if you're already staying. So if you're staying in major counties, like county cities, I would say, like for example Dublin, Cork, Galway, Limerick, or any other major counties here in Ireland, so you will be paying more rent as compared to the people who are living outside of these counties. So let's say that I'm for example me, I'm staying in county Westmeath और मेरा ऑफिस जो है दैट इज इन डबलिन, बट आई एम नॉट स्टेइंग इन डबलिन क्योंकि मेरे को पता है कि डबलिन इट्स वेरी एक्सपेंसिव. सो आई एम स्टेइंग in County Westmeath, and I'm having a 2-bedroom apartment here, and I'm paying a rent of 1,000 euros right now. So यही अपार्टमेंट अगर आप डबलिन या कॉर्क या लिमरिक या फिर अगर आप गॉलवे साइड अगर जाके आप ढूंढते हो और वहाँ रहते हो, तो सेम अपार्टमेंट विल कॉस्ट यू अराउंड 1,500 to 1,800 euros. And yes, I'm not sharing this apartment with anyone, so this is totally me and my family staying here. तो अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो आप अगर आप 2 या 3 या 4 लोग अगर आप आ रहे हो तो आप ये काम कर सकते हो कि आप पूरा घर 2 से 4 बेडरूम का घर आप पूरा उठा सकते हो रेंट पे, एंड यू कैन डिवाइड द रेंट बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल यू आर स्टेइंग देयर. तो अगर आप शेयरिंग पे रहते हो आउटसाइड दीज मेजर सिटीज़, तो आपको ये शेयरिंग अराउंड 500 से 600 या 800 तक 700 यूरो तक आपको पड़ सकता है पर मंथ. अगर आप यही चीज़ अगर आप शेयरिंग में रहते हो मेजर सिटीज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल लेट्स से डबलिन, तो यू माइट एंड अप पेइंग लाइक 700 to 900 यूरोस पर हेड फॉर शेयरिंग. तो गाइस, अगर मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा आप लोगों की, अगर आप लोगों का ऑफिस डबलिन में है या मेजर सिटीज़ में है, and if it is feasible for you to stay outside of these major cities, so do so, because at the end of the month you are probably going to save 300 to 500 euros, which is a very good amount. ठीक है, अगर शेयरिंग की बात करें तो if it is feasible for you guys, if you तो you can try to stay outside of these major cities, or provided you have a good transport facility from the area that you have selected to go to your office or universities or any other institute, right? तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एक बार चेक कर लेना, और उस हिसाब से आप थोड़ा सा बाहर आके रहोगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ इन द शेयरिंग ऑल्सो यू आर गोइंग टू सेव 200 to 300 euros, which is again a very good saving, being single and bachelor. ओके, तो गाइज अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, so that I can reach to my first 1,000 subscribers and I can continue bringing all the good content for you guys. तो गाइस, दूसरा टॉपिक है हमारा ग्रॉसरी का. तो मैंने कैप उतार दी है, मैंने हीटिंग ऑन करी है, तो थोड़ी सी गर्मी लग रही है तो मैंने कैप उतार दी, बट इलेक्ट्रिसिटी का मैं बताऊंगा. तो पहले दूसरा टॉपिक कवर करते हैं, विच इज़ ग्रॉसरी. तो ग्रॉसरी का तो रेट अब बिल्कुल स्काई रॉकेट हो चुका है. एवरीथिंग हैज़ गॉन अप. जो यहाँ पे कॉस्ट जिन चीज़ों का अराउंड 2 यूरो हुआ करता था, द कॉस्ट ऑफ दोज प्रोडक्ट्स हैव reached to now 4 euros and 5 euros. So grocery is just going up and up every single day. So let's say that पहले हम लोग बासमती जो हम लोग लिया करते थे from Lidl or from Tesco, so there's a small basmati packet that comes there, that was for around 90 cents, right? Last year की बात बता रहा हूँ. Then in the month of October, that 90 cents increased and it went to up to 99 cents.
Then starting of this year in January, the same packet has gone up from 99 cents to 1.19 euros. So you can see, this is a very simple example, of a rice. पहले जो यहाँ आटा आता था, right, तो the wheat flour, so the wheat flour that was around for 10 kilos packet I'm talking about, जो यहाँ पे around 16 euros में मैं खुद लेके आता था, मैंने इनफैक्ट 14 euros में भी लिया है. Like elephant आटा आता था, and there was one more आटा which was D से नाम था कुछ तो, and now these days there's a new one आटा that is in the market which is lucky आटा. तो यहाँ पे मतलब 3-4 ब्रांड आते हैं आटे के. पिल्सबरी भी आता है यहाँ पे. तो ये इन सारे जो 10 किलो के पैकेट होते थे, दैट वाज अराउंड 14 to 16 यूरोस का रेट हुआ करता था लास्ट ईयर. बट नाउ the prices are so much up high, I can't even tell. So it is double the rates of what we used to pay in 2022 or 2021. So recently मैं अभी lucky आटा लेके आया हूँ. It is one of the cheapest available right now, which is 18 euros. But apart from that, the Pillsbury that we used to have earlier, and the elephant atta, so the Pillsbury is now 27 euros, which was 15 or 16 euros till last year, till the mid of the last year. And the elephant atta is now 30 euros, which was around 17 euros last year. So you can see the prices are just doubling every quarter or every 5 or 6 months. The groceries are way up. So if I have to summarize ki for a family and for a single person, right, for a single person I mean students and bachelors हो गए, या फिर someone who is coming here as for working but he is single, so वो category वाला single. तो families का जो पहले हुआ करता था कि जैसे मेरी फैमिली है तो we used to spend around 300 to 400 euros per month, लेकिन अब वो इंक्रीज होके 500 to 600 euros हो चुका है. राइट. और फॉर द सिंगल आई वुड से, जैसे सिंगल जो पहले उनका होता था अराउंड 80 to 100 यूरोस का खर्चा महीने का, नाउ इट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 100 to 150 एंड इट कैन ऑल्सो गो अप टू 200 डिपेंडिंग अपॉन व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स यू आर पिकिंग फ्रॉम द सुपरमार्केट्स. गाइस ये रहा यहाँ का हीटर, और अगर मैं इसको ऑन करूँगा यहाँ से, ठीक है, तो ये देखो ये ऑन हो गया. और यहाँ से मतलब इसके ये अभी डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ से मैं इसको पूरा मतलब ऑपरेट कर सकता हूँ. और ये ना ये यहाँ पे मेरे तीनों रूम्स में है, 2 बेडरूम है और एक ड्राइंग रूम है, तीनों रूम्स में यहाँ पे हीटर है, ठीक है. तो दिस इज़ वन ऑफ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हियर इन इलेक्ट्रिसिटी. अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अगेन इट इज़ वन ऑफ द मेजर हिट्स बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन इन आयरलैंड. तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि हाउ मच यू आर कंज्यूमिंग. बट let me give you a good idea. So till last year, the charges that we used to pay for electricity per month was around 100 to 150 euros per month. But now it has doubled because the electric charges have increased by 35%. ओके. तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल सेंसिबल तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो. नाउ आइलैंड में क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सप्लायर्स है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आइलैंड है जो कि वन ऑफ द चीपेस्ट इलेक्ट्रिकल प्रोवाइडर्स है यहाँ पे आइलैंड में. तो इनके जो चार्जेस थे वो थे अराउंड 18 to 20 सेंट्स पर यूनिट. ओके. बट अब वो चार्जेस हो चुके हैं 40 to 45 सेंट्स पर यूनिट. बट नाउ आई एम पेइंग लाइक क्लोज टू 220 to 250 euros per month. So you can actually see the difference here. Now अब इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो जैसे फैमिली हो गई और शेयरिंग में जो हो गई, ठीक है, आप देख सकते हो. तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. अगर जैसे मैंने बताया अभी मैं 220 और 250 यूरो के बीच में कुछ ना कुछ आधा महीने का वो पे कर रहे हैं अभी हम लोग. इन द सेम वे इफ़ यू आर लिविंग together in a group of like 3 or 4 people, now it depends upon you how you guys are utilizing the electricity, electric heaters, electric boilers. So make sure you are turning them off if not required. So you can divide that amount between the number of the people you are staying together, right? अगर 250 का बिल आता है, if you're getting 250 euros divided by 3 or divided by 4, right? तो close to like 70 euros or 80 euros आपका per head एक आपका पड़ जाएगा for a single person. राइट गाइस, तो अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है आपकी ब्रॉडबैंड सर्विसेज. तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रॉडबैंड सर्विसेज है. आप कोई भी आप ब्रॉडबैंड की सर्विस यूज़ कर सकते हो फ्रॉम 3, फ्रॉम वोडाफोन, फ्रॉम या एयरटेल वेटल नहीं है,
ठीक है, इंटरनेशनल है यहाँ पे। तो आप कोई भी सर्विसेज यूज़ कर सकते हो यहाँ से ब्रॉडबैंड की। एंड अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो अगेन द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड अ लॉट फॉर द ब्रॉडबैंड सर्विसेज, एंड broadband is something which is required by everyone in his or her daily life, right? So provided if you're a student, if you're working somewhere, when you're working from home, or if you have a hybrid model, right? So probably you need to have Wi-Fi at your home where exactly you're staying, right? So be whether you have rented your home completely, or if you are renting out with someone, you are sharing a bedroom with someone, right? So Wi-Fi is one of the necessities now. तो अगर प्राइसेस की बात करूँ, टिल लास्ट ईयर आई वाज पेइंग 35 यूरोस, राइट? जिसमें कि जो मेरी स्पीड थी दैट वाज 500 Mbps, एंड दिस 3500 बोल रहा हूँ, 35 यूरोस पर मंथ, ओके? दैट वाज व्हाट आई वाज पेइंग टिल लास्ट ईयर, बट नाउ yesterday we have done a recharge and और अब रिचार्ज पे क्या आया, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ. Now when you're going to recharge it, the message that came in from the company was ki if you go with us for the next 1 year, right, then you have to pay 45 euros per month, which was 35 euros till last year, right? But if you don't want to go with us for 1 year, then you have to pay 60 euros per month. So you can see. तो इसीलिए मेक श्योर करो कि अगर आप कोई ब्रॉडबैंड का प्लान ले रहे हो तो आप अपने ब्रॉडबैंड वाले से पूछ लो कि अगर उनके पास कोई डील है आपके लिए, इफ देयर इज़ अ गुड डील, ग्रैब इट, राइट? क्योंकि प्रॉब्लम देखो यहाँ पे ब्रॉडबैंड की सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इफ़ यू स्टिक टू वन ब्रॉडबैंड सर्विस एंड यू नो like that you are going to stay here for the next 1 year, right? So go with it, because in that way you will be able to save at least 15 to 20 euros per month, like I did. We went and we recharged it with the new cost, which was 45 euros per month for the next 1 year. Okay, so the prices have increased. Now when we talk about between the family and the people sharing, so it depends, like let's say that you guys have 40, अब डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रॉडबैंड का आप ले रहे हो. अगर आप ज़्यादा स्पीड पे जाते हो, राइट, तो यू माइट एंड अप पेइंग लाइक 50 और 60 और 70 euros, बट उससे ऊपर कुछ नहीं है यहाँ पे. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट प्लान you have. So let's say that you stick with the basic plan which I have, which is 45 euros per month, and which gives you a good 500 Mbps speed, right, unlimited. तो अगर आप उस प्लान के साथ जाते हो तो be it like family, 45 euros. If you're in sharing, so let's say if you're sharing it with 3 people, तो कितना हो गया? तो 45 divided by 3, so that is close to like 13 euros के आसपास per head है वो आपका, ठीक है? Okay guys, so the next category we are going to discuss about is your phone. No, we are not actually talking about buying a phone, right? But we are going to talk about the services of that you have got from your SIM companies. Okay, so there are a lot of SIM companies out here in Ireland, so you can opt any one of them. All of them is nice, decent, good enough till the time you have all the 5 bars and you have 4G or 5G written on it. So till the time everything is good. So when we talk about costs, right, so the minimum cost is like from 15 euros and the maximum is like to 40 to 50 euros, right? So we can, so for me, let's say that I use 3, okay, which is one of the major services in Ireland and UK here. तो मैं 3 की सर्विस यूज़ करता हूँ और मैं टॉप अप करता हूँ हर मंथ का. तो आई एम यूजिंग देयर बेसिक विच इज़ 15 euros, जो कि मुझे डिसेंट इनफ 1 GB का डेटा पर मंथ का दे देता है. एंड आई डोंट यूटिलाइज मच ऑफ द डेटा आउटसाइड, ठीक है, बिकॉज वी हैव ब्रॉडबैंड एंड एवरीथिंग इन हेयर, एंड प्लस वी हैव कंपनी फोन्स, तो मैं वो यूज़ कर लेता हूँ. तो आई डोंट नीड इट, ठीक है, इतना ज़्यादा महंगा. बट 15 euros इज़ द पैक विच आई यूज़ एवरी मंथ, जिसमें मेरे को अनलिमिटेड कॉलिंग है यहाँ की लोकल, एंड 100 minutes इज़ टू माई इंटरनेशनल कॉलिंग. ओके, सो यही है. एट दिस टाइम द प्राइसेस हैव नॉट increased on the phone charges, but looking at the inflation rates and the way that things are going up high, I probably think it will go up, but I don't know when. So far they have not, क्योंकि मैंने अभी रिचार्ज किया है around 1 हफ्ता पहले ही, and I just paid 15 euros, which I was paying till last year, right? So the prices are stable here in terms of your mobile SIM services.
तो अगर आपको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लेनी है तो आई वुड से आई हैव कैटेगराइज्ड इनटू small, medium and large distances. If you are covering a smaller distances, so I think the rates are only €1. Now the prices in the transport have dropped. Okay, so पहले जो हमारा €1.5 लगता था या 1.2 ऐसा कुछ लगता था, so the prices have reduced to €1 for the smaller distances, and I think for a cap of 1 hour, where you can change multiple transport services. Now that is one thing. When we talk about a medium size distance, so let's say that अगर मैं कल को अगर Dublin से Athlone आता हूँ, right? Now the distance between Athlone to Dublin is around 150 kilometers, 127-150 kilometers के आसपास है, and it roughly takes around 2 hours from Dublin to Athlone to reach. Okay. Now I will be taking a major bus service, right? And the bus services which run from these places, which connects different places from Dublin to other part of the island, is like CityLink and Air Coach. Okay, so these are the two major ones here. So मैं CityLink लेता हूँ. If I am coming from Dublin to Athlone in CityLink, it will take around €15. Okay. Now if someone wants to go from Dublin to Galway, so Galway is one of another major cities in Ireland, so his charges will be like 18 to 20 to €22. Okay, so it depends upon the distance. Okay, so the distance from Dublin to Galway would be like close to 250 kilometers, 280 kilometers, and this is where I have kept this much of kilometers in the third section, which I categorized as the larger distances, where you might end up paying more as compared to the first and the second category, which is smaller and the medium sized distances. Now there is a very important catch here. The catch here is that you can actually save more money if you book a return ticket. Now what I mean by that is, so let's say that if I want to go from Athlone, which is in the Midlands of the island, to Dublin, अगर मैं single pay करता हूँ, if I just go it like for one trip there, right? और मैंने रिटर्न टिकट नहीं करी है, if I'm taking a bus service or a train service, doesn't matter, it is applicable to both of these two. So अगर मैं सिंगल के लिए पे करता हूँ तो in that case I have to pay like €15, right? अगर मैं रिटर्न टिकट बुक कर लेता हूँ, if I'm going today and I know like I'm coming tomorrow or day after tomorrow, and I pre-book a return ticket, so in that case I only end up paying €10, which is €5 जाने का और €5 वापस आने का. So you can see the actual difference here. So I am saving at least 50 to 60% of the amount here. Otherwise I would have ended up paying like €15 for a single there, and €15 again from Dublin to Athlone there. So that would have costed me around €30 now. But in this way I am able to save like 50 to 60% of the amount. So that's a very important tip, guys. If you know your return dates, book your return tickets. अगले टॉपिक में बात करते हैं जो कि है पर्सनल हाइजीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ अगेन वन ऑफ अ फैक्टर. ऐसे बदबूदार बन के तो यहाँ घूम नहीं सकते हो, तो नहाना धोना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, है ना, वो सब करना पड़ेगा. तो विल टॉक अबाउट इट. तो इसमें हम मेल और फीमेल दोनों को पकड़ के चलेंगे. मेल का खर्चा थोड़ा कम हो सकता है, फीमेल का खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट शी वांट्स. तो जैसे कि हम बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे कि लिप ग्लॉस हो गया, लिपस्टिक हो गया, परफ्यूम हो गया, राइट, और क्या हो सकता है, याद करेंगे यार, हेयरिंग थ्रेडिंग वो सब करा के, ठीक है. तो ऑन एन एवरेज वो 30 to 40 यूरोज आपका पर मंथ आप लगा के चलो कॉस्मेटिक्स का है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल हाइजीन, तो उसमें आपका हेयर कट का भी मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ. तो इसमें अगर मैं इंक्लूड करूँ आपका हेयर कट, तो हेयर कट आपका ऑन एन एवरेज जो लड़कियों का हेयर कट है यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 10-15 यूरो ज़्यादा है लड़कों से. तो €40 के आसपास, 40 से 70 यूरोज के आसपास आपका हेयर कट होता है फॉर द लेडीज़. नाउ व्हेन वी कम टू द मेन पार्ट, तो मैन में तो यार देखो कॉस्मेटिक्स का कुछ खर्चा है नहीं, ना अपर लिप्स है ना लोअर लिप्स है, ठीक है, ना आईब्रो थ्रेडिंग या मतलब इतना कोई खर्चा है नहीं. तो व्हाट आई कैन थिंक ऑफ इज you have a shower gel, and you have like a face wash, and you have what, deo is very must, right? क्योंकि अगर नहाओगे नहीं धोगे तो कम से कम डीओ लगा के अपने एकदम खुशबूदार बन के बाहर घूम सकते हो. बट नहा लो, ठीक है, नहा के ना फ्रेश लगता है एकदम, ट्रस्ट मी. तो अगर मैं इनका खर्चा पकड़ के चलूँ तो 20 से 30 यूरोज पर मंथ में आपका ये लिपट जाएगा, ठीक है. और वो भी तब अगर आप
रोज़ नहा रहे हो, ठीक है, और रोज़ इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो तब, ठीक है, तो 20 से 30 यूरोज़ आपका पर मंथ ही हो जाएगा। ना व्हेन वी टॉक अबाउट हेयर कट्स, तो हेयर कट्स जैसे कि यहाँ पे क्या है, 15 से 20 यूरोज़ में आपको हेयर कट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब यू हैव टू गो फॉर 40 यूरोज़, 40 यूरोज़ का हेयर कट भी है, ठीक है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से सलून में जाके अपनी तशरीफ़ रख रहे हो, ठीक है। तो तशरीफ़ थोड़ा सा वहीं जाके टिकाओ जहाँ पे मतलब तुम्हें पता चल जाए कि हाँ, मतलब अफोर्डेबल प्राइसेस एंड आई विल गेट अ गुड हेयर कट फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है। तो ना इसमें कोई सिंगल और फैमिली वाली कोई बात ही नहीं है, तो इसमें हम बात ही नहीं करेंगे, सिंगल है और वो है, तो यही कॉस्ट है फॉर मेल एंड फीमेल। सो गाइस, अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है आपके फ्यूल प्राइसेस। यस, पेट्रोल एंड डीजल, विच इज़ अगेन अ वेरी हॉट टॉपिक इन आयरलैंड बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन इन्वेजन दैट एंड द वॉर इज गोइंग ऑन। द प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड क्योंकि रशिया जो था, मतलब वो सप्लायर था, अराउंड 40% ऑफ द सप्लाई यूज्ड टू कम फ्रॉम रशिया टू द यूरोपियन कंट्रीज, बट नाउ दैट इज स्टॉप। सो द यूरोपियन कंट्रीज आर लुकिंग out for other options from the rest of the countries, right, in the world, maybe like from Middle East or somewhere. So the prices increased a little bit. अभी बीच में प्राइस 2 यूरो भी चला गया था, बट नाउ द प्राइसेस हैव स्लाइटली कम डाउन बिकॉज ऑफ सर्टेन initiatives from government. But likely in the coming time, in the coming few months, the prices they are going to again soar up high. तो अभी जो प्राइस चल रहा है डीजल का, दैट इज़ अराउंड 1.68, एंड पेट्रोल का जो चल रहा है दैट इज़ अराउंड 1.72. देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस, it's I think only 30 to 40 cents of difference between petrol and diesel prices here, right? So that is one thing. Another thing is like it totally depends upon you how long you're driving, what are the kilometers that you're getting on your car, right? तो उसके basis पे मतलब आपको उतना spend करना पड़ेगा. So let's say that you are not a heavy driver, ठीक है, तो I think for you 100 to 150 euros per month would be sufficient enough, right? Provided if you are driving, let's say 10 to 15 kilometers a day, maybe, right? तो उतना आपको पड़ जाएगा 100 to 150 euros per month. Okay guys, so the next one we are going to talk about is the healthcare in Ireland, right? Where you might have to end up paying on your insurance and all, because यहाँ पे अगर आप Ireland में आ रहे हो and if you guys are not covered by your companies or by your institutes, by your college and all, so you have to purchase a health insurance policy for yourself. Now when we talk about purchasing a health insurance policy, the minimum starts from like 40 euros, which is a very basic one, right? जिसमें कि ज़्यादा कुछ कवर नहीं होता, बट इट इज़ देयर, तो दिखाने के लिए ठीक है, बट इन द कमिंग टाइम इफ़ यू फॉल सिक एंड वो चीज़ उस बेसिक कवर में नहीं होती है, देन वो कवर नहीं होगी एंड यू एंड अप पेइंग फ्रॉम योर पॉकेट्स. ओके, so make sure you buy a good health insurance cover. Now when we talk about the cost, as I said, 40 euros is a base standard of maximum insurance companies, which starts and provides you very basic ones, and it goes up to like 150 to 200 euros. तो इंश्योरेंस भी आपका प्राइस हाइक हुआ है, राइट? तो डिपेंड करता है, अब जैसे जैसे आप अगर मानो आप 150 यूरोज़ का लेते हो तो यू विल गेट मोर कवर, राइट? And I think most of and majority of these insurance companies, they have categorized their packages like platinum, gold, silver, bronze kind of a stuff. So it depends upon you that which company you are opting for, what insurance package you are going for, and as I said, you will end up paying somewhere close to like, अगर मैं मोटा मोटा लेके चलूँ 40 यूरोस बेसिक, 200 यूरोस पर मंथ तक आप दे सकते हो. टेक एनी फिगर इन बिटवीन, टेक लाइक टेक लाइक 100 euros, ओके, वो एक फिगर आप लेके चल सकते हो इफ यू वांट टू डू अ कैलकुलेशन फॉर पर मंथ. So I have done the calculations for you guys, so you don't have to use your brains at all. So here you can see the approx cost of living for a family of 2, 3 or 4 members, which is outside Dublin, and the total cost is 1895 euros per month. Whereas in the lower section of this page you can see that for a family who is staying inside Dublin, the cost is increased to 2395. So you can see there's a difference of like 500 to 600 euros. So this is what I was trying to explain, that if you try to live outside the major cities, you will end up saving much more money. So guys, this is the cost of living calculation for people who are single. He or she could be a student or a working professional who is living in a sharing basis. Now,
If he's staying outside Dublin or any of the major cities, so probably he's going to pay less, as you can see in the calculation, which is 817 euros per month. Whereas if he or she wishes to stay inside Dublin or any other major cities, so he or she is going to pay up more, which is, you can see in the calculation, it comes out to be 1117 euros per month. तो गाइज यही थी आज की वीडियो, और अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया है ना तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ कर दो। देखो कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए यार, इतनी ठंड है और इतनी ठंड में मतलब जैकेट वैकेट पहन के आपके लिए व्लॉग बना रहे हैं। तो आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन आयरलैंड राइट नाउ, एंड विद दैट यू गाइज विल बी वेल प्रिपेयर्ड इनफ कि कितना मेरा खर्चा होने वाला है, कितना मैं लुटने वाला हूँ। और जल्दी से आ जाओ आयरलैंड, फिर मिलते हैं। और टिल दैट गाइज, time, enjoy yourself and see you soon. Cheers, bye.